Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Dr. Mudassar Shahzad from University of Education, and today we will discuss about the evolution and principles of systematics. The topic of our today's lecture is nature and origin to life. Dear students, as you already know about the Big Bang explosion, that was happened about 15,000 million years ago in this universe. Due to that explosion, there were many small fragments that were expanded and scattered in the universe and cooled down. तो जब बेटा ये ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे होने के बाद उनके ऊपर जो लाइफ है, खासतौर तौर पर जब हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी जमीन की, तो इसके ऊपर लाइफ स्टार्ट होती है। तो जब ये सैयारे मुकम्मल तौर पर बिखरते हैं तो बिखरने के बाद हर प्लेनेट के अपने मून और उनके सोलर सिस्टम जो हैं वो स्टैब्लिश होते हैं। जमीन जो है इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये तकरीबन आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व हुई थी। उसके बाद अर्लियर जो लाइफ थी जो जमीन के ऊपर बनी थी, उसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि बेसिकली वो लाइफ अल्लाह ताला की तरफ से या किसी भी एक नेचुरल पावर की तरफ से एक ऐसी क्रिएशन थी जो किसी और के बस में न थी। इस वजह से इसको हम सुपर क्रिएशन का नाम भी दे सकते हैं। Dear students, there are many theories related to the evolution of life on our earth. Due to these theories, many researchers try to explain the origin of life. In all of these theories, number one is theory of special creation. All the Muslims and many other non-Muslims believe on that theory. Next one is theory of spontaneous generation. Next is theory of biogenesis. Next is theory of biochemical evolution. Fifth one is theory of panspermia. And the last one is deep sea hydrothermal vent theory. Now we are going towards the word of evolution. Evolution word is basically a Latin word. The meaning to unfold the parts and organs of an embryo. The word evolution was firstly used by a Swiss botanist Albert von Haller in 1774. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस वर्ड के प्रोसेस की, तो नेक्स्ट यहाँ पे रॉबर्ट ग्रैंड इसने 1826 के अंदर इस वर्ड को यूज किया था फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्पॉन्जेस इनटू पोरीफेरेंस, मींस एवोल्यूशन ऑफ invertebrates. And then Charles Lyell used the word in 1832 for the evolution of life from aquatic to land sites. उसके बाद चार्ल्स डार्विन का नाम आता है जिसने 1859 के अंदर अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. Dear students, as you already know about the Charles Darwin, he wrote his theory in 1859 on the origin of species by means of natural selection. He argued from evidences that the species on our earth are derived from their ancestors. डार्विन जो था बेसिकली इसने, आपको पता है कि इसने एक दुनिया का एक ह्यूज चक्कर लगाया था, तकरीबन 5 साल इसने मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर रहते हुए या मुख्तलिफ खुश्की के
जगहों पे इसने घूम फिर कर मुख्तलिफ जो एविडेंसेस थे वो उसने इकट्ठे किए थे। तो मज़ीद इसकी जो थ्योरी की डिटेल है वो इंशाल्लाह हम अपने इसका जो अपना जो थ्योरी का लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल से आगे जाके देखेंगे। Students, you can see the different evidences of evolution. Due to these evidences, we can explain the word evolution. These evidences are paleontological evidences, embryological evidences, molecular evidences, geographical distribution, and comparative anatomy. We will discuss all of these in our next slides. First of all, we are going to discuss the paleontological evidences means fossil records. तो सबसे पहले बेटा फॉसिल रिकॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे ज़हन में एक अराइज होता है कि हमें ये जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो उसके अंदर हमें एनिमल की लुक्स पता चल सकती हैं, उसके बाद ये पता चल सकता है कि वो कब और कहाँ रहते थे। फॉसिल रिकॉर्ड्स की मदद से हमें ये पता चल सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म कब ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, किस टाइम पीरियड के अंदर वो मौजूद थे, उनके आगे और पीछे कौन कौन से एनिमल्स मौजूद थे, यानी किस ऑर्डर के अंदर वो मौजूद थे, उनसे पहले कौन से आए थे, फिर ये इवॉल्व हुए, इसके बाद कौन से आ रहे हैं। ये हमें पता चलेगा रॉक्स से। जो रॉक्स के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनसे हमें ये चीज़ें बआसानी पता चल सकती हैं। उसके बाद हमें मुख्तलिफ एनिमल्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स की मदद से उनकी चेंज शुदा जो शक्लें हैं, उनके अंदर जो ट्रांजिशनल फॉर्म्स होती हैं, उनका भी बआसानी पता चल सकता है। नेक्स्ट you are going to see about the chart in which there are different life eras. Originally, life is divided into four life eras. Number one is Precambrian, number two, Paleozoic, number three, Mesozoic, number four is Cenozoic. All of these periods are divided into their subclasses. As you can see that the Paleozoic is divided into 6 time periods. Number 1 is Cambrian, number 2 Ordovician, number 3 Silurian, number 4 Devonian, number 5th Carboniferous, and number 6th is Permian period. Whereas the Mesozoic is divided into 3 periods. Number 1 Triassic, number 2 Jurassic, and number third is Cretaceous time period. On the other hand, we will talk about the Cenozoic time era that is divided into two periods. Number one tertiary, number two quaternary. इन तमाम टाइम पीरियड्स के अंदर बेटा आप यहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल्स की एवोल्यूशन जो है वो बगौर यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइम पीरियड के अंदर कौन से एनिमल्स इवॉल्व हो रहे हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स के अंदर रॉबर्ट हुक और स्टीनो ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स जो थे उनके फॉसिल्स इकट्ठे करने के बाद उनकी जो एज थी उसके मुताबिक उन तमाम एनिमल्स को ऑर्गेनाइज किया था। इसके साथ इन दोनों रिसर्चर्स ने जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स थे उनके और जो रिसेंट एनिमल्स हैं उनके दरमियान डिफरेंसेस को बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन चेक किया था। डिफरेंट थ्योरीज हैं जो यहाँ पे एनिमल्स के लिए दी गई हैं, जिनमें नंबर 1 यहाँ पे आता है कैटासोट्रॉफिज्म। कैटासोट्रॉफिज्म जो है बेसिकली एक थ्योरी है जिसके अंदर हम जो ज़मीन है इसके अंदर मुख्तलिफ जो शेप्स चेंज होती हैं एनिमल्स की, उसके अलावा जो शॉर्ट लिव्ड एनिमल्स हैं या डिफरेंट किस्म के जो वायलेंट इवेंट्स आते हैं या जो वाइल्ड लाइफ जो डिफरेंट एनिमल्स का जो स्कोप है उसको इसके अंदर बासानी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात अगर करते हैं जॉर्ज कुवियर की, तो जॉर्ज कुवियर जो था ये पहला एक एंटोमोलॉजिस्ट था या इसको कंपैरेटिव एंटोमोलॉजिस्ट का नाम दे सकते हैं जिसने पैलेंटोलॉजी की बुनियाद रखी थी।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रॉक्स की, तो डिफरेंट जो रॉक्स हैं उसके अंदर जो रॉक्स की लेयरिंग होती है, जो रॉक्स के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रही होती है, उसके अंदर एनिमल्स की जो होते हैं फॉसिल्स, उनको बसानी वहाँ पे चेक किया जा सकता है कि किस लेयर के अंदर कौन से फॉसिल्स हैं और किस लेयर के अंदर कौन से फॉसिल्स मिल रहे हैं। उसके नतीजे में भी हम एनिमल्स को मुकम्मल तौर पर क्लासीफाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी है इसको नाम देते हैं यूनिफॉर्मिटेरियन। यूनिफॉर्मिटेरियन पे जिन रिसर्चर्स का बहुत ज़्यादा एतकाद है या जिन रिसर्चर्स का बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव है, उसके अंदर लामार्क, बुफन, होटन और लाइस के नाम आते हैं। In uniformitarian, we can easily discuss about the different types of rocks. In these, number one is primary rock that are without fossils. In these rocks, we cannot find any type of fossils due to a lot of time period and their soft bodies. Number two are secondary rocks. In secondary rocks, maybe molluscans or their relatives can be found. In tertiary rocks, fossils of mammals can be found, and in the quaternary rocks we can found the animals that are recently present or recently extinct from the world. Next one are geological changes such as volcanic eruptions. And the next one is, as you already know about that, the world or earth is too much old. Dear students, in 19th century, the term epigenesis was introduced in replacement of performationism. In epigenesis, we can discuss and check the development of an embryo. किसी भी एम्ब्रियो के अंदर होने वाले जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं या ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है, उसके कंसीव होने से लेकर उसके बर्थ तक, उन तमाम को हम एपिजेनेसिस के अंदर इजीली डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कार्ल वॉन बियर की। कार्ल वॉन बियर, he was originally a comparative embryologist. He compared many different embryos to explain the evolution and their embryological development. उसके बाद बात आती है यहाँ पे बेटा वॉलर की। He provides different evidences in 1928 about the extra-organism biosynthesis of an organic compound. उसके बाद बेटा आपको ग्रेगर मेंडल का ऑलरेडी आपको पता होगा, जो कि बेसिकली एक मोंक यानी पादरी था। He worked on 29,000 pea plants in approximately 7 years. तो ये जो बेटा मेंडल था, इसने भी अपने काम के अंदर जो मुख्तलिफ उसने जो पी प्लांट्स लिए थे, उन तमाम के अंदर जो जेनेटिक्स का बेसिकली किरदार था, उसको यहाँ पे मुकम्मल तौर पर इसने चेक किया और इसने ये बताया कि कौन से मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं जो डोमिनेंट हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करवाते हैं। एंड ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द रिसेसिव करेक्टर्स दैट आर suppressed by the dominant characters. After the death of Mendel in 1900, his work was established in the world. Now we are going towards the molecular or biochemical evidences. There are three basic molecules that are present in living organisms. Number one is DNA, that change into or transformed into RNA, and RNA is transformed into proteins. Proteins are basically composed of 20 different type of amino acids. Students, you can easily observe the 64 different types of triplet codons that are called as universal codon. बेटा इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास टोटल 3 साइड्स होती हैं। एक जो सबसे पहले साइड लिखी जाती है वो होती है लेफ्ट साइड, उसके बाद सेकंड साइड होती है अपर साइड,
और उसके बाद होती है थर्ड साइड। फर्स्ट और सेकंड साइड यहाँ पे हमेशा एक एक लेटर जो है वो लिखा जाता है, और जो राइट साइड होती है यानी जो थर्ड लेटर है वहां पे एक कॉलम के अंदर चारों जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल ये तकरीबन 64 कोडान्स बनते हैं, और ये सारे मिलकर तकरीबन 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। Here you can see all the biochemical compounds that are very important for all the living organisms, in which number one is DNA, number two RNA, number three proteins, in which the cytochrome C is very important. That will be discussed in our next slide. And the next one is 20 different type of amino acids that are responsible for the formation of different proteins. If we talk about the cytochrome C, first of all, we have to check what is cytochrome C. Cytochrome C is basically an ancient protein that is present in all the aerobic organisms. There is a sequence of different amino acids in all the living organisms of their cytochrome C. जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइटोक्रोम सी का जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का वो सेम होगा, वो आपस में रिजेंबल करते हैं, और जिनका ये डिफरेंट होगा वो एक दूसरे से डिफर करेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये चीज देखी गई है कि जो साइटोक्रोम सी है इंसान का और चिंपैंजी का वो आपस में काफी हद तक आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये दोनों एनिमल्स आपस में काफी हद तक कोरिलेट कर रहे हैं। That was all about our today's first lecture.